Hi guys, welcome back to class of learning. Here with Rahul Sharma, your friend and guide in this class, all about how to prepare for this particular paper. So this particular paper is all about modern European drama. Preparation कैसे करनी है? The final student those have chosen this particular subject really have lots of struggle to do. Reason sir notes नहीं मिले, चीजें clear नहीं हो पाई, books we don't have the books to. Then how to prepare in a final term? और अब finally क्या हुआ? That we're going to have our open books examination. तो यार वहाँ पे कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और कहाँ से प्रिपरेशन करें? तो गाइस दिस इज जस्ट फॉर यू. आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चंस ऑन टिप कर लेने हैं. यस दीज क्वेश्चन, जस्ट दीज क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 11 to 12 क्वेश्चन along with 3 क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गिव यू फॉर द बैकग्राउंड रीडिंग जो आपको करने ही करने फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेपर. देन यू कैन गिव द आंसर. क्वेश्चन कहीं से भी आपने यू बी एबल टू राइट द आंसर इन परफेक्ट मैनर. अब शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट को, चीजें दिमाग में रख लेते हैं कि हम पेपर की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं. एज वी नो दैट वी डू हैव अ 5 स्टोरीज. स्टोरीज नहीं आप बोलेंगे, इनको शॉर्ट प्लेस कहेंगे जो हमारे कोर्स में जो हमें पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट करने हैं. अब ये सारे के सारे मैं कैसे करता हूँ, करने का क्या तरीका होता है, किन कॉन्सेप्ट को समझना है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. एंड द सेकंड थिंग दैट आई रियली वांट टू टेल यू इज डू प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस. ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन ऑन टिप होने चाहिए आपके. शुरू करते हैं, टाइम निकाल करते हो. इससे पहले यार अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल दीज आंसर्स. लेट्स स्टार्ट द क्लास. The first thing here, the very first question, that is hereditary not disease, is the central problem of the Isban ghost. Discuss. Hereditary, not the disease. This is the problem. So this is the answer to the problem because we need to clear the ghost. The police know the ghost तो कहीं था ही नहीं. It is all a mental state of mind. That comes कि उसका बाप ऐसा था तो बेटा भी ऐसे ही होगा, सीरियसली ऐसा होगा. And the last it proves. अच्छा उसके कॉन्सेप्ट को समझो, पूरी तरह लिखना है. लिखेंगे कैसे सर, इसबिन की राइटिंग स्टाइल, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ये हमें आना चाहिए. And then come to the next point. Here we are. Mrs. Alvin is both a victim and a critic of conventional society. Discuss. Instead of this, if you are going to write the complete characteristics of Mrs. Alvin, वो भी काम करेगा पूरा काम करेंगे. एंड मेक श्योर दैट व्हाइल यू राइटिंग आंसर ट्राई टू पुट सम कोट्स फ्रॉम द टेस्ट. अगर वो कोर्स आप अपने टेस्ट में डालते हो तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है आपका. तो ये हो गए 2 क्वेश्चन एंड दैट फर्स्ट 2 क्वेश्चन कम फ्रॉम द गोस्ट. तो आई होप कि ये दोनों के दोनों आपको ऑन टिप होनी चाहिए. इफ यू क्लियर बोथ दीस क्वेश्चंस along with that one more question मैं ऐड करता रहूंगा हर प्ले के साथ. आपको कमेंट ऑन द appropriateness of the title of the story The Ghost. Comment on the appropriateness of the title of the story, The Ghost. Come on, next one. Servants are servants and woes are woes. Examine Strindberg's representation of the class and sexual conflict in Miss Julie. Miss Julie. It was seriously a play where we get puzzled. Yeah, what the hell is going on? Actually, what the hell is going on? As the entire play will be taken on one day, and there was just 3 characters, the 3 more dominant characters, those will be in the play. वो चारों तरफ से कॉन्सेप्ट को बता रहा है, क्या है उन चीजों को हाईलाइट करा. एंड द वे द राइटर राइट्स द प्ले इज सर्वेंट्स आर सर्वेंट्स एंड द वोज आर वोज. इट्स अ स्टेटमेंट दैट हैज बीन कोटेड. अब टेस्ट में कहां कोट किए, अगर ये आता तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया होगा आपके लिए आंसर को लिखने में. एग्जामिन Strindberg's representation of the class and sexual conflict in Miss Julie. Come to the next one. In spite of his conscious bias against women, Strindberg has portrayed Julie sympathetically. Discuss. अब जूली को उसने sympathetically डिस्कस किया, कैसे उसके कॉन्सेप्ट उसको पॉजिटिव भी रखने की कोशिश की है. अगर आपको दूसरे फॉर्मूले के अंदर ये जूली का कैरेक्टरिस्टिक हो गया कंप्लीट. तो ये हो गए 2 क्वेश्चन मिस जूली से. सो हियर आर द 2 क्वेश्चन फ्रॉम द गोस्ट, देन द 2 फ्रॉम द जूली. सो 2 तो देंगे, यस 2 हो सकता है किसी में 3 आ रहे हैं आपके पास. कम टू नेक्स्ट वन. Discuss the political implications. Discuss the political implications of the epilogue in the Good Woman of Saison. The Good Woman of Saison, one of the best work in this paper. The Good Woman of Saison. You guys need to write down this answer, and while you writing this answer, make sure that you are preparing your notes too. ये क्वेश्चन जो है सिर्फ आपको एक ग्लिम्स दे रहे हैं कि यार पेपर है क्या, पेपर को कैसे प्रिपेयर करना है. एंड दोज हु हैव नॉट स्टडीड टिल नाउ, yes you do have time. असाइनमेंट्स डेफिनेटली आने वाले हैं, आपको डेट्स मिल चुकी हैं असाइनमेंट्स वालों की. ओपन बुक टेस्ट के एग्जाम की टेंटेटिव डेट चेक कर सकते हैं आप. कम टू नेक्स्ट. कमेंट ऑन द रोल एंड द फंक्शंस ऑफ
the water sailor, the water sailor in a good woman says on. तो सर यहाँ पे आ गया रोल एंड फंक्शन वॉन्ग के पूरे करेक्टर को डिफाइन करना है, क्या पॉइंट था, किन चीजों को हाईलाइट किया था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं, कमेंट ऑन द रोल ऑफ गॉड्स, कमेंट ऑन द रोल ऑफ गॉड्स इन द गुड वुमन ऑफ सेजवान, ये मैटर करता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हियर वी आर। Examine how Janet employs role play to illustrate the interdependence of image and reality of victims and operations in the balcony. Here you need to look out the reality of victims and operations. So here the role of writer. How does writer deploy all the things? कैसे उसने deploy किया, किन चीजों को highlight किया है, वो ज़्यादा मैटर करता है। Then come to the next point. What is the importance of Tom? I repeat, what is the importance of Tom for the chief of police? Tom for the chief of police. उसके important को highlight करेंगे। And then come to the next question. Discuss the role of Chantal and the political significance of her death. Chantal and political significance of her death in the balcony. So the three questions are come from balcony. ऐसा कि balcony बाकी दो से ज़्यादा important था, ऐसा कुछ नहीं था। आपको हर कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करना है, चीजों को एक साथ इम्प्रेशन करनी है। Ghost, then will come to the balcony, yes, and then the good woman stays on, and here we are having the one Miss Julie. तो चार हो गया। Come to the fifth one, the last one. Here we are. Discuss any two aspects of avant-day drama. You guys need to know the avant-day drama क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, with the reference of rhinoceros. Then, women are represented as a sentimental, swallow, and irrational in rhinoceros. Do you agree? You need to give a complete description of women, those are being shown in rhinoceros, उनके कॉन्सेप्ट को बताना और एक एक चीज को क्लियर करनी। तो ये तो कोई वो क्वेश्चन जो आपको करने हैं कहाँ से डिफरेंट प्लेसेस जो हमारे कोर्स में 5 हैं, उन 5 को करना है। अब आते हैं, जब करते हैं बैकग्राउंड रीडिंग पर। अब जब बैकग्राउंड रीडिंग का पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है, दैट टू कम इन योर पेपर, तो आई होप कि आप लोगों ने ऑन टिप कर लिया होगा एंड यू गाइस डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो हम जंप कर सकते हैं किसके ऊपर, सर बैकग्राउंड रीडिंग के क्वेश्चन के ऊपर। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट यू नॉट गोइंग टू मिस एनीथिंग, सो दैट आई कैन मूव ऑन। सो टाइम टू डिस्कस द क्वेश्चन दो आर बीन रिमेनिंग। अब यहाँ पे आपने कहा इन क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या तरीका होगा, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग आंसर दीस बैकग्राउंड क्वेश्चंस। Not more than 3, that is more than enough. तो आपने कहा first question, what are the best views on the relationship between instructions and pleasure? Listen, this is really important, between the instruction and pleasure in theater. तो यहाँ पे आपको बेस्ट के बेसिक व्यूज को क्लियर करना होगा। Along with that, you can give the examples. इस आंसर में ज़्यादा बेटर करेंगे। तो guys, please make sure that you have to prepare one question from the background reading जो confirm paper में होगा। Then we come to next one. Why does Taylor think tragedy is impossible in modern times? This is really important. Tragedy is impossible in modern times. And then come to the last question. Here we are. Why does Janet view that the incarnation as an inadequate market of historical time? Yes, it is inadequate market of historical time. इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये थे वो 14 क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करने थे फॉर द पेपर। अब आप कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका क्या है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। लास्ट टाइम प्रिपरेशन टिप्स, सीरियसली लास्ट टाइम प्रिपरेशन टिप्स कैसे करने होंगे, करने का तरीका क्या होगा, किन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो गाइस द फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है इज to make sure that you're going to write down the summary of each and every drama or the play by your own in your notebook right now। अभी शुरू कीजिए that way better part। Best way to make preparation is to follow the video। सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं चैनल पे, आपने चैनल सब्सक्राइब किया ही हुआ है तो आप पूरी वीडियोस देखिए और अपने वर्ड्स में एक समरी लिखो। After writing the complete summary, go to the questions, see this the previous year questions। That is really important. Go to the previous year questions one by one। ऐसा नहीं कि सारे पेपर को एक साथ उठाएं। You do have the time, yes, you do have the time। आप लोग प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और देखो क्वेश्चंस वही हैं, सिर्फ मोल्ड किए गए। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन जाने के लिए इसलिए नहीं कहा कि आप सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करो।
प्लीज रीड ऑल द क्वेश्चन एंड चेक दैट दे आर द सेम क्वेश्चन बट थोड़े मोड करके हर बार चेंज कर दिए और आपको दे देंगे. एज सच द आंसर दैट रिमेन सेम. वो ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन में सेम होता है. तो आप लोगों सिर्फ ध्यान रखना है क्वेश्चन किस तरह मोड होकर आ सकता है. तो जो क्वेश्चन दिए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखते हो तो वही क्वेश्चन मोल्ड होके अलग अलग फॉर्म में बनाएंगे. तो गाइस जस्ट प्रिपेयर दिस. For more, you need to like, share, and subscribe. And you can follow me on Insta by the name of Classy Rahul. Till then, keep watching. Bye, guys.